Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy, Limkheda, Standard 11 Chemistry, Chapter number 2, Structure of an Atom, which will be page number 37 to 39 in lecture number 4. So let's start it. Before starting the lecture, we'll see that in last lecture what we have done it. We have done Thomson's model, then Rutherford's model, Z, A, isobars and isotopes. Now let's see in today's video what we are going to see. Developments leading to the Bohr's model of an atom and wave nature of electromagnetic radiation, EMR. So let's start the session. First of all, developments leading to the Bohr's model of an atom. There are two developments played a major role in the formation of Bohr's model of atom. Before that, historically, results observed from the studies of interactions of radiations with the matter have provided immense information regarding the structure of atoms and the molecules. Niels Bohr utilized these results to improve upon the model proposed by the Rutherford. And there are two developments which are played a major role in the formation of Bohr's model of the atom, and these are, let's see, first one, that is dual character of the electromagnetic radiation, which means that the radiations possess both wave as well as the particle in nature. Experimental results regarding atomic spectra can be explained only by assuming quantized electronic energy levels in the atoms. So let's see the first one. The name is the wave nature of electromagnetic radiation. Wave nature of electromagnetic radiation. Wave nature of electromagnetic radiation. James Maxwell in 1870 was the first to give the comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields on the macroscopic level. He suggested that when electrically charged particle moves with the acceleration, alternating electrical and magnetic fields one by one, alternating electrical as well as the magnetic fields are produced and transmitted. These fields
are transmitted in these fields are transmitted in form of waves, and which is called as an electromagnetic waves, or you can also call it as a electromagnetic radiation. Okay, so these are the two names, ये दो नाम है, electromagnetic radiation as well as the electromagnetic waves. Okay, then the first one, what they are saying, that is the thermal radiation. So thermal radiation means what? Suppose, just a minute, thermal radiation. So when you apply the heat to the any charged body, when you apply the heat to any charged body, the electromagnetic radiation is generated by the thermal motion of the matter. So suppose there is a matter if you apply the heat, then there will be the thermal motion among the particles of the matter, and this is considered to be the thermal radiations. There are two definitions over here. One is the frequency. So what is frequency? You can see over here the wave nature of electromagnetic radiation. In the first one, if you count, then 1, 2, 3 waves are there. In second, 1, 2, 3 and 4. In third one, 1, 2, 3, 4, 5. So number of waves are increasing. So the definition now, the number of waves that pass by each second is known as frequency, and it is measured by the unit which is called as a hertz, Hz. So this is what the frequency. Then the second one, that is wave nature of electromagnetic radiation. The definition of wavelength. So in case of the wavelength, if you see, then in wave nature, if you see, there are two parts which are seen over here. Okay, one is crest, which you can see over here, and second is trough. So the distance between two crests is known as wavelength. The distance between two crests is known as wavelength. Now, the first active study of thermal radiation was occurred in 1850s, and the theory of electromagnetic waves and the emission of such waves by accelerating charged particles was developed in early 1870s by James Clerk Maxwell, which was experimentally confirmed later by Heinrich Hertz. Here we'll learn some of the facts about the electromagnetic radiation. James Maxwell in 1870 was the first to give the comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies, ये बात हो गई हमारी, and the behavior of the electrical and magnetic fields on the macroscopic level
he suggested that when electrically charged particle moves under the acceleration, ये भी बात हुई है, alternating the electrical and magnetic fields are produced and transmitted these fields are transmitted in the forms of waves which are called as electromagnetic waves, that is EMW, or you can call electromagnetic radiation. Instead of waves you can write R stands for radiation. Okay, now here you can see the diagram where the red color mark, if you will see, that is the electrical field, whereas the blue color line you will see, then it is the magnetic fields. Both the fields are perpendicular to each other. Suppose if I say this is the electrical field, okay, then this will be the magnetic field. Both are perpendicular to each other at the 90 degree. So these you can see, and the direction of propagation they have given here, X, Y and Z. There are 3 axes. Now, although electromagnetic wave motion is a complex in nature, we will consider here only a few simple properties. Okay, now the first property, that is the oscillating electric and magnetic fields produced by oscillating charged particles oscillating charged particles if you will see, the fields which are produced by the oscillating charged particles are perpendicular to each other. Both are perpendicular to each other. Perpendicular means at the 90 degree. So how it would be? Suppose the direction of wave of propagation is this direction, then in that case the electric field you can see this way, whereas in case of the magnetic field will be this is magnetic field, whereas this one is the electric field. Both are perpendicular in nature, means 90 degree. Okay, so this is the first one. Then the second one, unlike sound waves or water waves, electromagnetic waves do not require medium. Electromagnetic waves, they do not require medium to travel. Okay, whereas there are two examples which they have given, sound waves and water waves, they required medium to travel, whereas electromagnetic waves, they do not require medium to travel. Okay, so these are the mainly two properties. Now the third one, it is now well established that there are many types of the electromagnetic radiation, so many types, which will differ from the one another by wavelength or the frequency. Their wavelength and frequency will be different. These constitute what is called electromagnetic spectrum. In diagram we have seen different regions of the spectrum identified by the different names, अलग अलग नाम रहते हैं. Some examples are, कुछ example देखते हैं हम. रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन अराउंड 10⁶ हर्ट्ज, याद रखना है हमें. यूज्ड फॉर, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ब्रॉडकास्टिंग माइक्रोवेव रीजन. दूसरा है अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज यूज्ड फॉर रडार. देन एग्जांपल इंफ्रारेड, IR
अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज, याद रखना है ये सब. फॉर द हीटिंग ultraviolet region, UV we are calling around 10⁻16 hertz, a component in of sun's radiation. The small portion of the 10⁻15 hertz is what ordinary called as a visible light, जो हम देख सकते हैं. It is only this part which we can our eye can see. Special instruments are required to detect the non-visible radiation. कुछ स्पेक्ट आते हैं, ठीक है, जो ये सब रेडिएशन जो हमें नहीं दिखते वो देखना हो तो देख सकते हो आप, ठीक है. Then the fourth one, different kinds of units are used to represent the electromagnetic radiation. Then wavelength should have the unit of length, and as you know that the SI unit of length is in meter. Since the electromagnetic radiation consists of different kinds of waves, much smaller wavelengths, smaller units are used. 2.7 figure shows the various types of electromagnetic radiation which differ from one another in wavelength as well as the frequencies. तो डायग्राम देखते हैं अभी, ठीक है, ये पूरा डायग्राम है. द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ए, पहला डायग्राम. ओके, दूसरे डायग्राम में आप देखोगे तो विजिबल स्पेक्ट्रम, द विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन इज ओनली द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम विच वी कैन सी. वो बहुत सिर्फ इतना नैरो है, हम इतना ही देख पाते, ठीक है. वो नैनोमीटर में देखो तो वेवलेंथ उसका 400 से 750 नैनोमीटर तक का है, ठीक है. बाकी सब देख सकते हो आप, एक्सरे, सॉरी गामा रेज, एक्सरेज, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव्स इन FM एज वेल एज इन AM, देन लॉन्ग रेडियो वेव, सभी का फ्रीक्वेंसी दोनों दिया गया है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है. देन इन वैक्यूम, all types of electromagnetic radiations regardless of wavelength travel at the speed 3 lakh kilometer per second, you can call it, or you can call it 3 into 10 raised to power 8 meter per second. ये भी याद रखना है. This is called the speed of light and is given the symbol c. The frequency का symbol क्या है, nu, ऐसे लिखते हो आप, ठीक है. wavelength lambda and the velocity of light that is c, तो उसका एक फॉर्मूला दिया गया है, c is equal to v into lambda. ओके, ये याद रख लेना है हमें. The other commonly used quantity specially in spectroscopy is the wave number, ठीक है. तो wave number क्या है, it is defined as the number of wavelength per unit length, number of wavelength per unit length which is called as a wave number. Okay. इसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वी बार. ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी बार, ठीक है. इट्स यूनिट आर रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ यूनिट, दैट इज m-1 रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ. सो म्यू बार इज इक्वल टू 1 upon lambda. You can write the formula. Okay. Smaller unit you can use it for the centimeter inverse also, 1 upon centimeter. ओके, छोटा यूनिट हो तो. अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 2.3, तो वो हम देखेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, दैट इज AIR Delhi, broadcast on frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of electromagnetic radiation emitted by transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belongs to? तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है. तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं. तो सबसे पहले देखो आप, तो लैम्बडा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू, ठीक है. ये हमारा फॉर्मूला है, सभी की वैल्यू रखो. c कितना होता है, तो क्या 3 into 10 raised to power 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, 1368 किलो हर्ट्ज, ठीक है. देन ये किलो हर्ट्ज को सिंपल हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे हम. तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वैसा का वैसा 3 into 10 raised to power 8 अपॉन में क्या हम लिखेंगे, 1368 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 3, ठीक है. सेकेंड इनवर्स में हो गया ये.
इसका रेशियो लेके आप आंसर निकालोगे तो आपको मिलेगा 219.3 इन मीटर। ठीक है, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो वेवलेंथ। इतना मीटर जो है, ठीक है, वो आने वाला है, उसका वेवलेंथ जो है वो, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, तो वो आ जाएगा रेडियो वेव में आएगा। ठीक है, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 2.3। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.4। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम extends from violet, that is 400 nanometer, to red, that is 750 nanometer. Express these wavelength in frequencies in hertz, that is 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे V is equal to C upon lambda। C they have given, या फिर हमें याद रहना चाहिए, that is 3 into 10 raised to power 8। ओके, और लेमड़ा दिया गया है हमें, ठीक है, दैट इज 400 नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 raised to minus 9, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, फिर इसका डिवीजन करेंगे हम, विल गेट द आंसर, दैट इज 7.50 इंटू 10 raised to 14 हर्ट्ज। ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी बाय। ठीक है, फिर V इज इक्वल टू C अपॉन लेमड़ा। ये जो आपने सबसे पहले फाइंड किया, दैट इज फॉर वायोलेट कलर, ये वायोलेट के लिए था। अभी फॉर रेड कलर हम फाइंड करेंगे, तो C विल रिमेन सेम, वो तो एक सेम ही रहने वाला है। ठीक है, रेड कलर के लिए कितना दिया गया है, 750 इंटू 10 raised to minus 9। इनको भी मीटर में कन्वर्ट कर देना है, तो इसका आंसर आएगा हमें 4 इंटू 10 raised to 14 हर्ट्ज। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी फॉर रेड कलर। ठीक है, सो द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमें दिखता है वो कितना है, आप देख सकते हो 4 से लेके 4 इंटू 10 raised to 14 हर्ट्ज से लेके 7.50 इंटू 10 raised to 14 हर्ट्ज तक, इतना हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था 2.4। ठीक है, अभी हम देखेंगे 2.5 क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए वो भी करते हैं। सबसे पहले वेव नंबर फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए क्या है हमारे लिए, तो लेमड़ा फाइंड कर लेंगे, वेवलेंथ जो एंगस्ट्रॉम में दिया गया है उसको कन्वर्ट करो पहले सेंटीमीटर में, यानी 5800 इंटू 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, तो 5800 इंटू हो जाएगा, ये 2 का डिफरेंस रहता है, तो 10 raised to minus 10 मीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका लेमड़ा। ठीक है, तो अभी यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा, फॉर्मूला है हमारा 1 का 1, लेमड़ा क्या है 5800 इंटू 10 raised to minus 10। तो इसका आप आंसर निकालोगे तो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1.724 इंटू 10 raised to 4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसका सबसे पहले आंसर मीटर में आपको मिलेगा, वो होगा 1.724, पावर में डिफरेंस होगा 10 raised to 6 मीटर इनवर्स होगा। मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है, कैलकुलेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लेमड़ा। C कितना है हमारा 3 इंटू 10 raised to power 8। लेमड़ा कितना अभी हमने फाइंड किया, मीटर में लिखना है 5800, क्वेश्चन में भी दिया गया है
10⁻⁻10, ठीक है। तो इसका आंसर निकालोगे तो वो मिल जाएगा 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। आगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी प्लैंक्स क्वांटम थियरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा नेचर यानी कि पार्टिकल इन नेचर। अभी आज हमने क्या किया, वेव नेचर, वेव बिहेवियर, ठीक है। आगे हम पार्टिकल नेचर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।